Ruchi. I'm Deepa. And she's Aisha. Just like any other new immigrant, renting was our biggest expense on the monthly budget, which we were really looking to cut it down and rather buy our own house. Initially, we had no idea where to start from. But we used this strategy to narrow down our home search to find our budget home just in 2 months. Well then, welcome to the next episode of our home buying series, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं ऑनलाइन होम बाइंग टूल जिसकी हेल्प से आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए कनाडा में घर देखना शुरू कर सकते हैं। Like इंडिया जहाँ पर आज भी आपको एक रियल्टर पे डिपेंड करना पड़ता है to view the property, in Canada you can do this thing same with an online tools. Every house that come into Canadian market has to register on realtor.ca. Now this website, if you are quite new to it, you may gonna take some time to figure out how to navigate or to use the filters, but don't you worry, we are gonna walk you through it. सबसे पहले आपने डिसाइड करना है आपके घर की लोकेशन। जैसे हम लोग ढूंढ रहे थे तो उस टाइम पे हमारी सबसे बड़ा फैक्टर जो था वो था हमारा घर हमारे वर्क के लोकेशन के आसपास होना चाहिए। सेकंड हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि वो हाईवे के आसपास होना चाहिए जस्ट इन केस इफ यू वांट टू ट्रैवल टू डिफरेंट सिटीज। फैक्टर नंबर 2 इज योर अफोर्डेबिलिटी। नाउ हियर इज द मिनिमम लिमिट जिसमें कि एक मिनिमम अमाउंट में डिसेंट घर मार्केट में जो अवेलेबल है, लेट्स पुट इट 250,000 एंड फॉर द मैक्सिमम लिमिट आपको मॉर्गेज अप्रूवल कितने का मिला है एंड ऑन टॉप आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 550,000 वी आर पुटिंग फॉर टाउन हाउस सर्च. In this hot market where prices are going drastically up, using these techniques we were able to save our time and lots of money. To know how, make sure you watch our complete video till the end. The next is property type. Property type में दो common options होती है, one is residential and another one is condo. While residential जो होते हैं वो freehold होते हैं, in condos they are monthly fees attached to it. So जो freehold होते हैं they are more expensive than condos but they appreciate more over the time. Whereas जो condos होते हैं they are good for the small budget because उनका price कम होता है but over the long run वो आपको expensive पड़ते हैं और they don't appreciate as much as the freeholds. हम अपनी लोकल सिटी को कवर कर रहे हैं. इन टुडेज सिनेरियो विल कवर टाउन हाउस सर्च इन सिटी ऑफ किचनर. बेस्ड ऑन योर सर्च क्राइटेरिया आपको पता चल जाएगा आपके सिलेक्टेड एरिया में टोटल कितने घर अवेलेबल है डिफरेंट रीजन्स में, और एज सून एज आप एक को भी क्लिक करेंगे यू विल गेट टू नो कि टोटल नंबर ऑफ लिस्टिंग उस रीजन में कितनी है. रियली वेरी इजी टू कॉट अप इन दैट सुपरफिशियल स्टेजिंग हाउस व्हिच बीइंग द रीजन कि हमारे टॉप 5 फीचर्स थे जो हम घर में ढूंढ रहे थे व्हिच रियली हेल्प अस टू नैरो डाउन आवर सर्च. राइट Let's pull up one of the houses और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी features. Number 1 was the freehold house. Since we were not interested in paying the monthly fees and as Deepak said, freehold value ज़्यादा appreciate करती है over the time. Must have number 2 is a 3-bedroom size house. Now as we were already a growing family और हमारे parents हमें इंडिया से regularly visit करते हैं, so for a need of our 3-bedroom was a must. Third must have was in continuity, that is having a 1400 and plus square foot house. This justify in itself to have a decent 3-bedroom size house you need to have a 1400 and plus square foot house. Guys हम अपनी next video में share करेंगे the actual prices of the houses based on the current market. So make sure to subscribe to our channel to see that video on the first notification. जो घर आपने सिलेक्ट किया है उसके नेबरहुड के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो realtor.ca में वो इन्फॉर्मेशन भी ईजिली अवेलेबल मिल जाती है. यू कैन सी डिफरेंट थिंग्स लाइक एज ग्रुप, हाउस होल्ड इनकम, ओनरशिप डिटेल्स एक्सेट्रा. Another must have for us was the house under 15-year-old. Not only the house start depreciating after a cycle of 15 to 16 year, but it start asking for some expenses as well. For example, roofing or air conditioning, and that could be a big expense which we were really not interested in bearing as a first time home buyers. एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आप realtor.ca में फाइंड कर सकते हैं इसकी लिस्टिंग के साथ में ही उसमें मॉर्गेज कैलकुलेटर भी है. सो बेसिकली यू कैन फाइंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू योर डाउन पेमेंट, हाउ मच कैश यू नीड एंड अदर फाइनेंशियल थिंग्स राइट ऑन द लिस्टिंग.
Last but not the least are the amenities which include first the bus stop. Since हमारे पास एक ही गाड़ी और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेती हूँ तो इट वॉज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि बस स्टॉप घर से कितना दूर है. सेकेंड, ग्रॉसरी शॉपिंग घर से कितना दूर है, बिकॉज वीकली आप शॉपिंग पे जाते हैं एंड यू डोंट वांट टू ड्राइव 30 मिनट जस्ट टू डू अ ग्रॉसरी. लास्ट इज हाउ क्लोज इज द स्कूल. दो Arshia is not ready to go to a school until next 4 years, but it's really very good to have your house near a good rating school in order to appreciate your property over the time. बताओ कि कैसे घर देखना होता है, बताओ आप बता दो. Another cool thing about realtor.ca कि इसमें हर लिस्टिंग की पिक्चर्स भी अवेलेबल होती हैं. पिक्चर्स नॉट ओनली हेल्प टू विजुअलाइज कि आप घर कैसा लगता है बिना एक्चुअली विजिट किए, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू नैरो डाउन योर चॉइसेस. Guys, buying the house was the biggest decision we have taken in our life together and we couldn't have been more happier about it. Being a first time home buyer, this journey could be challenging, but we are sure you will be able to find your dream house soon. And if you do, please don't forget to share with us the good news. If you wanna tell कि आप कैसे टाइप की वीडियोस related to life in Canada या home buying series में अगली देखना चाहेंगे, please don't forget to put that in comments below. We'll be happy to hear from you guys. Who is Deda? Deda?